Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's session. Yesterday we have seen what? What we have seen yesterday? Yes, we have seen this program structure, right? Before that, we have seen some basic concepts, basic like Python features, history, and all. And after that, we have seen Python program structure. Okay, and after that, I explain you the sample Python program. So today we will run this program and we'll see the output. Okay. First, tell me, have you all installed Python on your system? आपने पाइथन इंस्टॉल किया है? इंस्टॉलेशन आपको बताया है ऑलरेडी कैसे इंस्टॉल करना है? No, ma'am. Okay, so first I'll explain the sample Python program or okay, before that we'll see the installation. I'll show you steps for the installation, then various IDs that you can use for Python, and then we will execute this program. Okay. Okay, ma'am. Okay. So this Python program we already discussed. I will show you the execution after installation. Okay, so let us start with the Python installation, how to install it. Okay, so first step is first step for Python installation is you have to download the Python installer. Now from where you will download this Python installer? From official website of Python, right? So that official website is python.org. You can follow this link, okay? Or you can simply, if you just search on Google, like install Python on Windows. So whatever first link you will get, that will be probably this official link. Okay, you can click on this link and go to official website of Python. Okay, for as we discussed yesterday, the stable version of Python is Python 3. Okay, so we have to install Python 3, and according to configuration of your laptop, you can download this 64-bit or 32-bit according to your system configuration. Okay, so let me show you. Let us go to this link. Is my Google Chrome visible? ब्राउजर विंडो दिख रहा है? No, ma'am. Okay, I'll share that. Now, is it visible now? Yes, ma'am. Just give me 1 second. So, when you click on this link you will be redirected to this page. Okay, and from here you can download the stable version, that is latest Python 3 release. Okay, if you click on this, the installer will be downloaded. Okay, you can save that installer. Just a second. So from here, as my system is 64-bit, I can click here. So this, just a second, I will share my entire screen so that you can see everything. Just wait for a second.
Okay, is my screen visible now? Yes, please respond. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am, visible. so this is the Yes, ma'am. official page of Python. So according to your configuration, you can click on any of the link. All these are stable version. You can see here. These are stable releases. Okay. So as my system is 64-bit Windows, so I'll click here, and this is how you have to download the installer. Okay, you have to click on save button. So this installer will be downloaded. Okay, it is hardly 25 MB, so uh, it is now downloaded. Now you have to run this installer. Okay, just double click on this installer and click on run. Okay, and then follow the steps. Python will be installed. Okay, so I have included all the steps as Python is already installed on my laptop, so I am not again installing it. I'll just explain you the steps. Okay, so you have this step one is you have to click on this download link. Okay, then step two is running the executable installer with all default setting. You can just click on next, and Python will be installed. Okay, so after that you will get this screen, install now. You have to click on install now, and then you will redirect it to the last screen, that is setup was successful. Okay, then you can close. Got it? Any issue till now? No, ma'am. Okay, so this is how you can install Python on your laptop. Okay, follow these steps. और अगर आपको कुछ भी difficulty आती है तो you can ask me, I will help you in that. Okay, but it is a very small setup, so you will not get any issue hopefully. Okay, now how to check whether Python is installed or not? So for that you have to go to command prompt. So you will click on start button, type cmd, and then you can open the command prompt. Okay, then here you just have to type python minus minus hyphen hyphen version. Okay, and then if you see this python 3.11.1, that means Python has been installed on your system. Okay, this is how we check which version is installed or whether Python is installed or not. Got it? Okay, ma'am. This is the basic Yes, ma'am. installation of Python. Okay, now what you can do with this installation, you can create any Python file in Notepad. Okay, and you can run it from command prompt. जैसे and for running that file you just have to type command python. Let's say our name of our file is add, so I'll enter here python space add.py, and when I click enter, when I press enter button, that file will be executed and you can see your output on command prompt only. Got it? With basic installation you can execute your python file like this. Okay, but we will be using IDE because that IDE is very helpful, and your coding become very easy when you use IDE. Okay, so now we'll see what this IDE is. So we have so many IDEs, like आपको Visual Studio Code पता होगा. So like that we have multiple IDEs where you can run your Python program. Okay. So what is utility interface or IDE for Python? So IDE means integrated development environment. Okay. So instead of writing your program in Notepad, because it becomes very boring, you have to check each and every word, you have to check each and every space. Instead of that, this integrated development environment give you a powerful tool that can
significantly enhance the coding experience for Python developers. Means when you press a single letter, it it will give you list of all the keywords starting with that letter, so you can select, so there are less chances of mistake in your program when you use IDE. Okay, so integrated development environment is a powerful tool, and there are so many IDEs available for Python. Okay, so these IDEs provide a comprehensive environment for writing, testing, and debugging the code. Some IDEs are there even if you make some errors in your program, they help you to solve those errors. So in this manner, IDE will help you to write your Python program. So during this course also we will be using some IDE to write our program. Okay. Now they come with features like syntax highlighting, code completion, debugging tools, version control integration, and making development faster and more efficient. Okay. So with IDE you can make your development, you can make your programming faster and more efficient. Okay, so it will require less time to write the same program in notepad than द आईडी, मतलब अगर आप आईडी में प्रोग्राम लिखोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू नोट पैड, बिकॉज इन नोट पैड you have to check each and everything, nothing ready made is there, right? But when you use IDE, some things are already made, you don't have to worry about the syntaxes, you don't have to worry about syntax errors in your program, so IDEs are the best. Okay, so some popular Python IDEs are PyCharm, then Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Spider. Okay, we will be using Visual Studio Code. Visual Studio Code you can easily get from internet. You can just Google search and download Visual Studio Code and install it. Okay, it is very simple to install. You can easily install it. Okay, then if you want to install Jupyter Notebook or Spider, for that you need to install Anaconda. Just a second. तो अगर आपको जुपिटर या स्पाइडर चाहिए तो उसके पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एनाकोंडा. ओके, सो दिस एनाकोंडा आल्सो you can, if you just Google search and for downloading anaconda or installing anaconda, you will get that. And once you install anaconda, this Jupyter notebook, Spider, everything is there, Python is also there. So अगर आप anaconda install कर रहे हैं तो आपको Python install करने की भी ज़रूरत नहीं है. Python is already there in anaconda. ओके, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन रन योर कोड इन विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, एनी डाउट इन इंस्टॉलेशन एंड IDE? तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड. तो उसके लिए आपके स्टेप्स क्या रहेंगे? फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल पाइथन. ओके, जो भी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैंने लिखा है उससे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है. उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देन यू कैन राइट योर प्रोग्राम. ओके, I will show you how to write program, how to execute it in Visual Studio Code. Is there any doubt in Python installation or Visual Studio Code? Yes. No, ma'am. So now I will show you the interface of Visual Studio Code. Can you see this? आपको पता है विजुअल स्टूडियो कोड? आपने यूज किया है कभी? No, ma'am. नहीं यूज किया, ठीक है. ओके,
बताती हूँ आपको विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है. यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, ये जो फर्स्ट वाला साइट है इस पे जाके आप आपका जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे मोस्ट ऑफ पीपल यूज विंडोज, तो यहाँ से आप उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो एंड देन फॉलो द स्टेप्स, इट विल गेट इंस्टॉल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले आज आप क्या करोगे, आपका जो लैपटॉप या सिस्टम है उस पर पाइथन इंस्टॉल करो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप. आई विल शेयर दीज स्लाइड्स विथ यू. तो और वीडियो भी, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी आपके साथ. तो बाय फॉलोइंग दैट, फर्स्ट यू इंस्टॉल पाइथन, उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करो. तो जो भी कोड हम ड्यूरिंग लेक्चर देखेंगे, साइड बाय साइड आप आपके लैपटॉप पे ट्राई करके भी देख सकते हो. ओके, यस, दिस इज होमवर्क फॉर यू कि आपको आज पाइथन Yes, इंस्टॉल ma'am. करना है एंड उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप में. डू यू ऑल हैव लैपटॉप और सिस्टम? सबके पास है? Yes, ma'am. हाँ, तो आपको आज ये विजुअल स्टूडियो कोड और पाइथन इंस्टॉल करके रखना है, ताकि जो भी हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे या ड्यूरिंग लेक्चर जो भी कोड लेंगे, तो आप साइड बाय साइड आपके एंड पे भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. ओके, so this is visual studio code and now I have written here this program. कल जो हमने प्रोग्राम देखा था सैंपल वाला पाइथन का प्रोग्राम, so same program I have written here in visual studio code. ठीक है, this is called as IDE or user interface. So instead of writing python program in notepad, हम visual studio code में हमारे programs लिखेंगे. Okay, so let us understand this program. इसमें क्या है, सबसे पहले we have included some comments. This is nothing but the which section in structure of program we have seen multiple sections of python program. तो ये वाला कौन सा section है? Documentation, ma'am. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, इंपोर्ट. ओके, तो जब आप आईडी यूज करते हो, लेट से मैथ एक लाइब्रेरी है लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे मैथ्स लिख दिया, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे येलो लाइन दिख रहा है नीचे मैथ्स के नीचे. Yes, ma'am. हाँ, अगर आप उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे वो एरर भी दिखेगा कि import maths could not be resolved. मतलब इससे हमें समझ में आता है कि ये इसमें कुछ some mistake we have made. So if I remove this S, that yellow line will disappear and you will get to know that there is no error. ठीक है, so this is the advantage of using IDE. अगर आप सेम प्रोग्राम नोटपैड में लिखोगे तो आप जब एग्जीक्यूट करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके प्रोग्राम में कुछ तो मिस्टेक हुआ है. ठीक है, so this is very much easy. This makes development very much easy, so we will be using this IDE. ठीक है, तो हमने मैथ का लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, उसके बाद वी हैव डिफाइन वन ग्लोबल वेरिएबल दैट इज पाई एंड पाई को हमने इनिशियलाइज किया मैथ डॉट पाई से. Okay, so this pi is a float variable in math module which is predefined. Okay, we are using predefined variable. Then after that, what is this? Function definition, right? What is name of function? Yes, what is the name of function? Calculate area. Calculate area, and radius is the parameter, and only one statement is there inside this function, that is written pi star radius star radius. जैसे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सो वी हैव रिटन पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस. ओके, देन हियर दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. ओके, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने कोलन दिया है. तो कोलन से ये स्पेसिफाई होता है कि इसके बाद जो भी लाइंस है दैट कम्स अंडर दिस फंक्शन. लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कुछ स्पेसेस दिए हुए, एक एक टैब दिया हुआ है,
So ये जो इतने लाइन्स है that comes under this calculate area function. After that ये जो है एरिया एंड प्रिंट का स्टेटमेंट ये फंक्शन डेफिनेशन के बाहर है, ठीक है। तो पाइथन में हम ब्लॉक कैसे स्पेसिफाई करते हैं, विथ स्पेस और टैब, और इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हम करली ब्रैकेट्स देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट इन पाइथन वी गिव इंडेंटेशन, वी गिव स्पेसेस और टैब्स, ओके। So while writing program you have to be very careful about this indentation, because अगर यहाँ पे आपने एक भी टैब दे दिया तो ये जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन में। अगर मैंने यहाँ पे टैब दे दिया तो ये एरिया प्रिंट का स्टेटमेंट जाएगा फंक्शन के डेफिनेशन में, तो ये प्रिंट नहीं होगा। गेटिंग इट? तो अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको फंक्शन के बाहर आना पड़ेगा। सो आई एम रिमूविंग दिस स्पेसेस। गेटिंग इट? Okay, now I will execute this program. So in Visual Studio Code here, can you see this play button? Yes, ma'am. तो ये प्ले बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो हियर यू कैन सी द आउटपुट। कैन यू सी दिस आउटपुट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So just to understand the program structure, here we have defined this function, okay, calculate area। लेकिन सर्कल सर्कल का एरिया अगर आपको प्रिंट करना है तो विदाउट डिफाइनिंग फंक्शन भी आप कर सकते हो, राइट? तो कैसे करोगे अगर मुझे ये फंक्शन नहीं चाहिए? तो व्हाट आई विल डू? ओके, टेल मी। सिंपल, जैसे आप जावा में करते हो, जस्ट लाइक दैट वी विल डू हियर। ओके, मैं क्या करती हूँ, ये जो इतना कोड है इसको कमेंट करती हूँ। जस्ट ये कोड मैंने कमेंट किया। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल बट विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन। तो कैसे करोगे? हमारे पास एक वेरिएबल है पाई, जिसमें हमने पाई की वैल्यू स्टोर कर रखी है। उसके बाद क्या करेंगे हम? यस, यू हैव टू टॉक, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न पाइथन। क्या करेंगे इसके बाद? Ma'am, we will define the radius and multiply with this pi, ma'am. So we will define one radius variable, रेडियस में कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। देन एक एरिया नाम का वेरिएबल लेंगे, एरिया इक्वल टू पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क, ओके। तो एरिया में हमने पाई स्टार रेडियस स्टोर किया। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, ठीक है। कल किसी ने तो ये एफ वाला क्वेश्चन पूछा था, तो आई विल बी क्लियरिंग दैट आल्सो। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट में बस एरिया डाल के प्रिंट करेंगे, ओके। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका आउटपुट क्या आया, ओनली एरिया हैज बीन प्रिंटेड। गॉट इट? कुछ मैसेज नहीं दिया है यहाँ पे, हमने सिर्फ एरिया का वैल्यू प्रिंट किया है प्रिंट एरिया से। लेकिन अभी मुझे चाहिए इन दिस फॉर्मेट, एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, विदाउट गिविंग दैट एफ वी विल ट्राई टू प्रिंट द आउटपुट। कल किसी ने तो पूछा था कि एफ क्यों दिया है, ठीक है। तो विल सी दैट व्हाई शुड वी राइट दैट एफ, ओके। अभी क्या किया हमने, एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया, okay। What is this area? Here we want to print value of this variable, right? Save this and run this। तो
तो यहाँ पे क्या हुआ, यस, कैन यू एरर सी, आया मैम। हियर वी हैव गॉट द एरर, the area name area is not defined, ठीक है, because we have not given f, this python interpreter will not understand कि यहाँ पे क्या लेना है, okay, now if I write here f it will understand कि this is formatted output और ये जो एरिया है इसके जगह पे ये वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करनी है, okay, now I will execute the program, is there any mistake, area of circle, just a second, it should print here value for the area, ये क्यों नहीं आ रहा, एरिया ऑफ सर्किल, ओके ओके, मैंने सेव नहीं किया है शायद, नाउ इट इज प्रिंटिंग हियर, सी दिस इज वन मोर वे टू प्रिंट द एरिया, क्या किया है यहाँ पे मैंने, एरिया में हमारे पास एरिया की वैल्यू है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करके मैंने क्या किया है, दिस एरिया ऑफ सर्कल इज वन स्ट्रिंग and I have concatenated it with another string, but area is not string, area is some float, right, area में तो कुछ तो float value होगा, so while concatenating I have to convert it to string, तो कैसे करते हैं string में convert, str and in bracket that variable, तो ये इसका conversion हो गया string में and it is getting printed like this, okay, लेकिन वो formatted वाला भी हम देखते हैं कि क्यों print नहीं हो रहा, is there any mistake, can you find out, जैसे कल मैंने बताया कि आपको भी मुझे हेल्प करनी है इफ आई एम गेटिंग रॉन्ग समवेयर, कभी कभी प्रोग्रामिंग में समझ में नहीं आता, खुद की मिस्टेक खुद को दिखती नहीं है, why it is not getting printed, okay, now you can see, I think अभी प्रिंट हो रहा है एरिया, कैन यू सी द आउटपुट, यस मैम। तो अगर जब हम यहाँ पे प्रिंट में f देते हैं उसका मतलब है कि हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, अगर आपको वो प्रिंट एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करने हैं तो यू कैन गिव इट लाइक दिस इन करली ब्रेसेस वेरिएबल नेम, लेकिन आपको प्रिंट में स्ट्रिंग के पहले f लगाना पड़ेगा, ठीक है, so same program we have written without using function, जो पहले वाला प्रोग्राम हमने देखा था उसमें हमने फंक्शन यूज किया था, सेम प्रोग्राम वी हैव रिटन विदाउट यूजिंग फंक्शन, ओके, एनी डाउट टिल नाउ, yes, please respond quickly so नो that we मैम, can नो go मैम। further, कुछ डाउट नहीं है, हाँ मैम। ठीक है, लेट अस गो टू आवर स्लाइड, ओके, तो इंस्टॉलेशन हमने देख लिया, आईडी भी हो गया,
नाउ जैसे हमने ये प्रोग्राम देखा, इसमें क्या किया हमने, वी हैव गिवन वैल्यू फॉर रेडियस एज फिक्स्ड वैल्यू, राइट, बट समटाइम्स we want to accept that value from user, right? जैसे जावा में आप कैसे लेते हो, if you want to take some value from user, accept some input from user, how do you accept it in java? Yes, do you remember? How do you accept value from user in java? Yes, my by input. In java I am asking, जावा में आप इनपुट से नहीं लेते हो इनपुट, स्कैनर से मैं स्कैनर से, राइट। वैसे ही पाइथन में हमारे पास इनपुट फंक्शन है विच इज इनबिल्ट फंक्शन वी कैन यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। लाइक जैसे हमने अभी एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम देखा, तो जो रेडियस था हमने फिक्स दिया था वैल्यू 10। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट फ्रॉम यूजर यू कैन यूज दिस इनपुट फंक्शन। ओके, सो दिस फंक्शन takes input from user and converts it into a string. Okay, this is very important, this you have to remember कि whatever input you will accept from user, this input function will always convert that into string। मतलब अगर आप कोई रेडियस भी यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो तो इनपुट फंक्शन जो कुछ भी यूजर से इनपुट लेता है एवरीथिंग इट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। ओके, डू यू नो व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, Sequence of character. सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो जो भी कुछ आप इनपुट लोगे यूजर से वो वो होगा स्ट्रिंग में। अगर आपको उस पे कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे आपने रेडियस का इनपुट ले लिया यूजर से, तो ये जो 10 आएगा, अगर यूजर 10 इनपुट दे रहा है तो ये 10 आएगा स्ट्रिंग में, राइट। तो अगर आपको इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो आपको ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। गेटिंग इट? ये होगा स्ट्रिंग, इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में एंड देन यू कैन कैलकुलेट एरिया। ओके, सो this basically input function we use to take input from user and it convert everything that is accepted from user into string। ओके, नाउ जब आप इनपुट फंक्शन लिखते हो आपके प्रोग्राम में तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहां पे आके रुकता है एंड इट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर सम इंफॉर्मेशन। जहाँ पे भी इनपुट आपने स्टेटमेंट लिखा है वहां तक प्रोग्राम, उसके पहले स्टेटमेंट तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जहाँ पे आपने इनपुट लिखा है देयर इट विल स्टॉप एग्जीक्यूशन एंड इट विल आस्क यूजर टू एंटर समथिंग, राइट। उसका सिंटैक्स ऐसे होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट एंड प्रॉम्प्ट। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। हियर यू कैन सी द एग्जांपल। So if you want to accept your name or user's name, so how you will write input in bracket enter your name। Okay, so it will ask user to enter the name। okay, और जो कुछ भी string user डालेगा that will be stored in name variable। okay, and then we can print that name like this। okay, we can try this program। सिंपल इनपुट का प्रोग्राम हम ट्राई कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जस्ट अ सेकंड, फर्स्ट हियर आई विल ओपन द फोल्डर where we are doing the programs। okay,
Now this is our first program. I will create new program, new Python file here, that is input demo. Okay, and now this input demo is open here. So how to accept input from user? क्या लिखेंगे हम? Yes, if I want to accept name from the user, what you will write? Name equal to Input. input, and in bracket you can give any message. Even though this message is optional, लेकिन अगर आप कुछ मैसेज नहीं डालोगे तो सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन पे ब्लिंक होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाई माय एग्जीक्यूशन हैज स्टॉप. तो आपको यहाँ पे मैसेज, you always give message here. So enter your name. उसके बाद अगर मुझे नेम प्रिंट करना है तो आई कैन राइट प्रिंट and in bracket name. Got it? Then save and run. So it is asking me to enter the name. एक मिनट, ये थोड़ा स्टक हो गया है. So many windows are open. Can you see this output? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे आई एम एंटरिंग माय नेम, एंड ये जो बाद में आया दैट इज इट इज प्रिंटिंग द नेम. ओके, नाउ अगर मुझे ये आउटपुट फॉर्मेट करना है तो मैं क्या करूँगी? एफ, देन यहाँ पे हम कुछ मैसेज लिखेंगे. योर नेम इज, एंड देन कर्ली ब्रैकेट में हम देंगे ये नेम. दिस डबल कोट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने अभी फॉर्मेटेड आउटपुट दिया, योर नेम इज मयूरी. गॉट इट? इनपुट कैसे लेना है समझ में आया? सिंपल इनपुट. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो हमारा इनपुट था इसका डेटा टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग है. सो यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू स्ट्रिंग, और हमें स्ट्रिंग ही प्रिंट करना था, इसलिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर. Now here you can see in syntax we have to give some prompt, that is अभी जो हमने prompt दिया enter your name. So this is prompt is what? It is a string that is displayed on the screen to ask the user for input. Okay, तो क्या user से हमें क्या input चाहिए, वो जो information है that we put in prompt. Okay, this is optional, but
if it is not provided, the user will simply see a blinking cursor. तो उसमें उससे यूजर को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या एंटर करना है. That is why we always keep practice of giving some prompt. Okay, and then this name, this example we have seen. Okay, now if user enters non-numeric value, this will raise a value error. Okay, that we will see in the next slide. Here. Okay, तो अभी हम another example we will see. यहाँ पे हम यूजर से क्या इनपुट में ले रहे हैं, एज, राइट. नाउ एज इज नॉट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, एज इज न्यूमेरिक वैल्यू, राइट. बट जब भी इनपुट पाइथन जब भी कुछ भी इनपुट लेता है यूजर से, इट विल ऑलवेज कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग, राइट. तो वो जो स्ट्रिंग हमने एक्सेप्ट किया है यूजर से, इन नेक्स्ट लाइन हियर यू कैन सी वी हैव कन्वर्टेड दैट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर. तो अगर आप कुछ नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजर से, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर. गॉट इट. ये भी प्रोग्राम हम ट्राई कर सकते हैं. we will try this program. I'll type so it will be more clear. इसको हम कमेंट कर देते हैं. Now okay, instead of that age, what we will do, जो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हमने ये रेडियस वाला एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम किया था, यही प्रोग्राम हम करेंगे. लेकिन रेडियस जो है वो हमें क्या करना है, यूजर से एक्सेप्ट करना है. तो कैसे करेंगे, आई विल रिमूव दिस रेडियस इज इक्वल टू 10 फ्रॉम हियर. और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, Input इनपुट Input double in quote में enter the radius एंटर value, radius value. रेडियस. ठीक है. उसके बाद अगर मैं एज इट इज ये रखूंगी तो होगा क्या. ओके, जस्ट अ सेकंड. no ma'am. इंपोर्ट कॉपी करती हूँ. ओके, वी विल सी दैट. ठीक है, हम ऐसा ही रन करके देखते हैं. इनपुट रेडियस, वो हमने रेडियस में स्टोर किया, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग सम कैलकुलेशन. ओके, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये क्या देगा, एरर देगा. बिकॉज कुछ भी मैं अगर न्यूमेरिक भी रेडियस डालती हूँ, तो व्हाट इट इज गिविंग, some error, can't multiply sequence by non-int of type float. Okay, so it has given some error. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो कुछ भी इनपुट है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हियर यू कैन सी. पहले हमने इनपुट लिया, उसके बाद इंट इन ब्रैकेट जो भी ये वेरिएबल है उसको वहां पे लिखा. ठीक है, तो रेडियस में हमने रेडियस लिया, फिर से हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर. तो ये जो हमारा रेडियस है ये इंटीजर भी हो सकता है या फ्लोट भी हो सकता है. तो बेटर टू कन्वर्ट इट टू फ्लोट और ब्रैकेट में लिखेंगे रेडियस. ठीक है, एनी डाउट. नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे. कैन यू सी दिस एट द बॉटम, ये बहुत नीचे गया है, दिख रहा है आपको ये. Yes ma'am. Yes, ये ma'am. फॉन्ट ठीक है आपको विजुअल स्टूडियो कोड का, या इंक्रीज करना है फॉन्ट. इंक्रीज कर दिए हैं. आउटपुट थोड़ा छोटा रहे. ठीक है, अभी आउटपुट छोटा रखती हूँ मैं, तो वो नीचे चला जाता है. एट द बॉटम यू कैन सी हियर. इज इट ओके. नाउ इट इज आस्किंग फॉर radius. Okay, so here if I enter some radius and
press enter key. Now it has given this area. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, everyone. अगर आपको अनम्यूट करके नहीं भी बोलना है तो यू कैन गिव मैसेज इन द चैट बॉक्स. Any doubt till now? No doubts? No one. Okay. So, two things we have learned here. How to take input, right? So, in Python, we have to take input using input function. Then, second thing, that input is always in string format. So, whenever you want to perform some numerical operation on accepted input, you have to convert it to appropriate data type. जैसे हमने यहाँ पे convert किया था int में, program में हमने convert किया था float में, like that you have to convert. Okay. Now one more thing I want to show. यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया और उसको कन्वर्ट किया फ्लोट में. ओके. लेकिन अगर यूजर ये रेडियस नंबर की जगह पे कुछ कैरेक्टर डालता है, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन यूजर इनपुट, राइट. यूजर कुछ भी डाल सकता है. जैसे आई विल जस्ट अगेन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और इट इज आस्किंग फॉर रेडियस. तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ कैरेक्टर्स डाल दिए तो व्हाट इट विल डू, it will throw some value error. Got it? If you are converting this to some data type, and if that data, if it is not able to convert that input into that data type, it will throw some value error. Understood? So that point was written here. If user enters a non-numeric value, this will raise a value error. Okay, so actually this statement should be here while converting input to other data type. मतलब अगर आप स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन इनपुट में कुछ कैरेक्टर्स दे दिए तो इट विल थ्रो सम वैल्यू एरर. गॉट इट? Yes, ma'am. नाउ वन मोर थिंग वी कैन सी हियर कि इंस्टेड ऑफ फ्लोट, लेट से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में. ठीक है. और जब हम इनपुट दे रहे हैं वहां पे अगर हमने कुछ फ्लोट दे दिया, साइड बाय साइड सी, ये जो प्रोग्राम में हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ये मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है. अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप नोट डाउन करके ले सकते हो. ठीक है. ये प्रोग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, स्लाइड्स भी शेयर करूंगी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू फील कि दिस आई शुड नोट डाउन, तो मेक वन नोटबुक फॉर पाइथन एंड यू कैन note down the things. Okay. Now here I will enter some float value, जैसे 10.56. Still it is giving value error. Now why it is giving value error? Yes, can anybody explain? Pi contain, ma'am, some float value. Because we have entered float value and we are trying to convert that float value to integer, right? This will be Mhm. some string, okay, but it is float. But that float cannot be converted to integer. That is why it is giving value error. Invalid literal for int with base 10, 10.56. Okay. So this is how you get value error if you do not convert it to appropriate data type. जो आपको enter करनी है उसी में आपको convert करना पड़ेगा. ठीक है. So this is about converting input to other data types. Let us move further. Now you can accept input with default values. You can specify some default values to the input. Means if we want to provide a default value that the user can accept or override, we can do it as follows. Okay, so here you can see कि मैंने एक वेरिएबल लिया है default name and some name is there, right? Now I am asking user to enter the name, okay,
and here in bracket I have given default name, राइट। और इसके बाद अगर यूजर कुछ एंटर नहीं करता है, स्टिल आई एम प्रिंटिंग दैट नेम, तो यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, इन दैट केस दिस डिफॉल्ट नेम विल बी प्रिंटेड। गेटिंग इट? When I am accepting some input from user, but user is not entering anything, in that case for that particular variable I can have some default value. Okay, so anytime if user does not enter anything, that default value will be considered. Got it? Okay, ma'am. Yes, ma'am. We can try this. ये यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट। So here I am checking if not name, means if there is nothing inside name, then name is equal to default name and then it will print it. Okay. From this PowerShell I want to execute. Enter your name and in bracket we have shown कि default name is John Doe. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करती, still it is giving hello John Doe. Got it? यहाँ पे इनपुट पे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, I have entered nothing in the input, still it is saying hello John Doe because we have set some default value for the input. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. And now we'll see the last thing for input, that is you can read multiple input in one line. You can read multiple input in one line by using split method. Okay, so there is a split function um, which helps you to accept multiple inputs in one line. जैसे कुछ प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें आपको मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रोग्राम लिखना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ओके, एंड यू वांट टू एक्सेप्ट दोस टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, तो आप क्या करोगे? Either you can write two input statements. Okay, I'll show you what you can do. Okay, now if you want to print addition of two numbers and we want to accept those two numbers from user, what we can do? First method x is equal to input में हम करेंगे enter first number, right? Similarly we will define one more variable, that is y, and यहाँ पे enter second number, right? उसके बाद क्या करना पड़ेगा? यस, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट एक्स प्लस वाई। यस, इज इट वैलिड? इससे सम प्रिंट मैम होगा क्या? इट्स वैलिड फॉर, लेकिन ये स्ट्रिंग का जो रिजल्ट देगा हमको। स्ट्रिंग का रिजल्ट देगा, राइट, बट वी वांट एडिशन, तो एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? so we'll do x is equal to int x, y is equal to int y, and then print x plus y. Now is it okay? Yes, ma'am.
enter first number, enter second number, and it is printing the sum. Okay, now here we have written two statements, two input statement. Lekin instead of these two input statement, what you can do, you can combine this like this, x comma y, and you can write here enter two numbers, और यहाँ पे dot split. Okay, so split function will split the values and will store in these different variables. ठीक है, तो ऐसे split method यूज करके हम इनपुट split कर सकते हैं. Okay, now we'll execute this. Enter two numbers, so I am entering two numbers by giving space, and here you can see the result. Clear? Yes, ma'am. So this is all about input in Python, how to accept input. So we have seen how to accept input using input function. Then we have seen how to convert that input into other data types. You know, convert input to other data types. Then we have seen how to give default value for input, and then lastly we have seen how to take multiple inputs with single input statement. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So we will have attendance and then we'll stop. Dhanesh Kumar, Yes, ma'am. just a second. Just wait for a second. Nitesh Kumar, Yes, ma'am. Ankit, Akash, Mandira, Mansi, Dipansh, Anjaneya, Sandeep. Only four people are there. Why other people have not joined? ये उनकी सीजन में मैम अंकित तो था क्लास में से Okay. So we will stop for today. Tell your other class members to join on time and don't miss the lectures ओके मैम बाय because Python is very trending technology and it is in your syllabus. अगर आप पाइथन नहीं सीखोगे तो आपको मतलब जब आप इंटरव्यू में बाद में जाओगे तो इट विल बी वेरी लाइक, अगर आपको पाइथन आता है तो इट विल बी फीदर इन योर कैप. कोई भी टेक्नोलॉजी में पाइथन यूज होता है, सो डोंट मिस द लेक्चर्स. आपको पाइथन बेसिक से ही सिखाना है या आपको कुछ कुछ पता है? लेट मी नो दैट कि ये मैं जो ले रही हूँ ये लेवल आपको ठीक है या बहुत बेसिक हो रहा है? ठीक है नहीं मैम मैम, ठीक है मैम. सॉरी, तो एक एक के बाद एक ठीक है मैम ओके. नितेश, आपको
Yes, ma'am. ठीक है, ma'am. All of you are okay with these levels of teaching? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. We'll continue like this only. For today, we'll stop. Let's continue in next lecture. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.